Assalamu alaikum. In last class, I was revised up to the chemical equilibrium and acids and bases. So, we are studying about the VSAQs, which are important VSAQs. I was explained all the VSAQs starting from the third chapter. In the third chapter, some VSAQs are there. थोड़े VSAQs एग्जाम में पूछता जब तो वो VSAQs समझाए थर्ड चैप्टर से, फोर्थ चैप्टर के पूरे VSAQs समझाए. और फिफ्थ चैप्टर कौन सा है? व्हाट इज द फिफ्थ चैप्टर? स्टैक्योमेट्री के VSAQs समझाए. फिर उसके बाद थर्मोडायनामिक्स के VSAQs पढ़ाए थे. आफ्टर दैट केमिकल इक्विलिब्रियम एंड एसिड्स एंड बेसिस, इसके VSAQs हो गए थे. तो केमिकल इक्विलिब्रियम के थोड़े VSAQs और एसिड्स एंड बेसिस के VSAQs में व्हाट इज द एसिड, व्हाट इज द बेस, व्हाट इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या है, ब्रॉन्स्टेड बेस क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है, इसके बारे में लास्ट क्लास में समझाए थे बेटा. तो पीएच कैलकुलेशन का एक छोटा प्रॉब्लम करा के ये चैप्टर के VSAQs कंप्लीट कर देता हूँ. नेक्स्ट चैप्टर में जो है ग्रुप्स है, वो ग्रुप्स के कौन से VSAQs है भी समझाते. तो कैलकुलेट द pH ऑफ 10 to the power of -3 HCl solution. Okay, define the pH and calculate the pH of 10 to the power of -3 HCl solution. What is the pH? pH is nothing but the negative logarithmic based on value of H plus ion concentration. H plus ion की concentration की negative logarithmic value को pH बोल के बुलाते. So it is useful to express the concentration of very dilute solution. What is the meaning of the very dilute solution भाई? ज्यादा वाटर है और थोड़ा सोल्यूट पड़ा हुआ है, that is called as the dilute solution. Quantity of the solvent is more and the quantity of the solute is very less. That solution is called as dilute solution. In case of the dilute solution, in order to express the concentration of a dilute solution, pH scale is used. Just no need to write all that things, just you have to write this one. Negative logarithmic based on value of H plus ion concentration is called as pH. ऐसा लिखे तभी आपको मार्क्स मिल जाते हैं. व्हाट इज pH बोले तो ऐसा लिख देना. और कैलकुलेट द pH ऑफ द 10 to the power of -3 MHCl solution. तो मोलारिटी दिया तो पहले क्या करना, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू दी n into m. ये फॉर्मूला लिख लेना है आपको. फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला. Normality is equal to what? H plus ion concentration. If you know the H plus ion concentration, we can calculate the pH of the solution. Okay. So in the question, H plus ion concentration is not given, m is given. Now then you convert this m into the n. In the question, m is given. You convert this m into the capital N. Normality में convert करना. कि दो normality को आप H plus के ऐसा consider कर लेना. ठीक है भाई. तो n इज इक्वल टू क्या करना है, व्हाट इज द स्मॉल n? स्मॉल n यहाँ से आता. हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? देखो एक हाइड्रोजन है. 1 into 10 to the power of -3, that is the n is equal to 10 to the power of -3 only. This is the H plus ion concentration. डायरेक्ट ये लिखे तो भी चलता है. n is equal to this one, n is equal to this, H plus is equal to 10 to the power of -3. Now then you apply the logarithm on both side, इधर और उधर दोनों बाजू logarithm अप्लाई करिए. log H plus is equal to log 10 to the power of -3. log 10 to the power of -3 को -3 log 10 बोल के लिखते. -3 log 10 वैल्यू 1 है तो ये विल गेट दी -3. log H plus is equal to -3. what we need the minus of log H plus. That's why I am writing the minus at here. Now then it is becomes +3. So this is the pH of the solution, that is equal to 3. Okay. सेम प्रॉब्लम अगर दे दिया आपको तो आप क्या करेंगे, देखिए. मगर H2SO4 दिया, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ द, कैलकुलेट द pH ऑफ 10 to the power of -3 MH2SO4 solution. H2SO4 solution की pH कैलकुलेट करो बोल रहा. तो कैसा कैलकुलेट करते थे अभी मैं समझा. आप n इज इक्वल टू n लेना है. n इज इक्वल टू H plus ion concentration, but here n is not given, m is given. To convert this n m into the n, that is small n into capital M.
So capital N is equal to what is the small n value? Two hydrogens are there. 2 into 10 to the power of minus 3. So this is nothing but what? H plus ion concentration. H plus ion concentration is equal to 2 into 10 to the power of minus 3. Apply the logarithm on both sides. So you write down this log H plus लिख लो आप. तो इधर बाजू राइट साइड में भी log 2 into 10 to the power of minus 3. तो फिर उसके बाद में इसको कैसा लिखते? log 2 plus log 10 to the power of minus 3. ओके, इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना. log 2 की वैल्यू 0.3010, इसको -3 log 10 बोल के लिखते. 3 इधर आ जाता, -3 log 10. now then 3 log 10 वैल्यू 1 है, तो 0.3010 माइनस 3 आता. 3 में से 0.3010 निकाल दिए, 6.9 समथिंग आता. दिस इज द log H प्लस. यहाँ अगर माइनस डाल लिया तो ये प्लस 2.9 आता. ये 2.9, 6.9 में 3000 में से 0.3010 निकाल दिए, you will get be 2.69 something आता, 2.69. So this is about the pH of the solution. तो ऐसा करना, कैलकुलेट करना है आपको. These are the important questions in the chemical equilibrium and acids and bases. After that, in the S block elements, there are 3 or 4 questions are there which are important. First thing, which elements? 1A group elements. Why these alkali metals are reactive or not present in free state. Alkali elements, first A group elements, are highly reactive and these are not present in free state because due to the NS1 configuration, these are highly reactive. Those are highly reactive, those are not present in free state, those are present in the compound state. This is the answer. Due to the NS1 configuration, these are reactive and these forms the compounds easily, therefore these are not present in free state. This is the one question. Now second question in this is why lithium salts are mostly hydrated? Why lithium salts are mostly hydrated? क्या मतलब है इसका? लिथियम के जो भी salts है पानी से मिले हुए रहते, मतलब salts के अंदर पानी रहता. What is the reason? एक दो रीजंस बना सकते हैं. लिथियम is having small atomic size, और ये small atomic की size की वजह से ही due to the lithium hydration energy, इसका hydration energy ज़्यादा रहता, ज़्यादा water molecule से associate होता. Because due to these two reasons, lithium hydration energy is more and lithium atomic size is very less. Due to this reason, lithium salts are mostly hydrated. Lithium salts हाइड्रेटेड हुए रहते, पानी से मिले हुए रहते. सो पानी सॉल्ट्स के अंदर अब्जॉर्ब होके रहता, दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रेटेड बोलते हैं उसको. सो दिस इज अबाउट द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस. एंड देन व्हाट आर द यूजेस ऑफ द सोडियम कार्बोनेट के यूजेस बोलिए. इट इज यूज्ड, Na2CO3 is used in washing purpose. It is used for washing purpose in laundries में washing purpose के वास्ते, कपड़े धोने के वास्ते इस्तेमाल में आता. Na2CO3 is used as a laboratory reagent कैसा काम आता, and it is also used for the preparation of sodium hydroxide. Sodium carbonate is used in paper industry, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में यूज करते. एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग ग्लास के प्रिपरेशन में SiO2 से मिलाते. SiO2 plus Na2CO3, upon heating of that you will get the Na2SiO3. It is used for the preparation of glass. These are the uses of sodium carbonate. What are the uses of sodium hydroxide?
NaOH के यूजेस लिखो बोल रहा हूँ। NaOH इज कॉल्ड एज द कास्टिक सोडा। तो ये कास्टिक सोडा को कहाँ यूज कर रहे हैं भाई? कास्टिक सोडा इज यूज फॉर मेकिंग सोप। सोप इंडस्ट्री में ये इस्तेमाल में आता। सोप नॉट ओनली दैट इन पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, नेक्स्ट टैनिंग ऑफ लेदर्स, टैनिंग ऑफ लेदर के वास्ते काम आता। नेक्स्ट NaOH is used for the extraction of sodium metal. ये इसके यूजेस हैं टैनिंग ऑफ लेदर, पेपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर द रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोल. ओके, नेक्स्ट इट इज यूज्ड फॉर इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप and it is used for the extraction of the sodium metal. These are the uses of the sodium hydroxide. Next, what is the biological importance of Na plus and K plus ion? These two are useful for the nerve impulses, transmission में काम आते हैं, nerve impulses को transfer करने काम आते हैं. So this is another question beta. Not only that, this maintains the osmotic pressure and controls the blood pressure. Osmotic pressure को maintain करते हैं. And potassium is present and activates the enzymes which converts the ATP to ADP. This is about the these are the some important uses of the sodium and potassium. After this, in the secondary group elements, yes block में ही second group elements से दो questions है. What happened when magnesium metal is burnt in air? हवा में magnesium metal को burnt करे तो क्या form होता? Magnesium metal burns in the air and forms this magnesium oxide and magnesium nitride. Okay, 2 Mg plus O2 gives rise to 2 MgO. It gives the magnesium oxide. It burns in the air and forms the magnesium oxide. Not only magnesium oxide, it directly combines with the nitrogen and gives this compound magnesium nitride Mg3N2. So this is about the reaction, or this is the burning of the magnesium metal in the air. Okay, when magnesium metal is burnt in the air, that forms the oxide and magnesium nitride. Now next question, write the characteristic flame colors of the second A group elements. Flame colors of second A group elements. So in this first one, beryllium and magnesium, this does not give the flame colors. The next element, calcium, burns with the which color? Brick red color. Next, strontium burns with the crimson red color. Next, barium burns with the apple green color. So these are the characteristic flames of the secondary group elements. Now then after that, what are the uses of the quicklime, CaO? CaO के uses क्या है? What are the uses of the quicklime? It is used for the preparation of what? Sodium hydroxide. Sodium hydroxide के preparation में, sodium carbonate के preparation में भी quicklime को use करते. Now next, CaO calcium oxide है भाई, और generally it is used for the preparation of the some chemicals. थोड़े chemicals के preparation में sodium hydroxide है, sodium carbonate है, इसके प्रिपरेशन में क्विकलाइम को CaO को यूज करते हैं, और डाइल्यूट क्विकलाइम इसको एंटासिड्स के सभी यूज करते हैं. सो दीज आर द यूजेस ऑफ द क्विकलाइम CaO. व्हाट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस? POP किसको बोलते हैं? व्हाट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस? half hydrated calcium sulfate CaSO4 dot half H2O. Semi-hydrated or half-hydrated calcium sulfate is called as plaster of Paris. इसको ये फॉर्मूले से भी लिख सकते Ca2CaSO4 dot H2O. It is prepared from the gypsum.
Gypsum upon heating about 120, it loses its one half water molecules and forms the uh, half hydrated calcium sulfate, that is called as the plaster of Paris. That is the preparation, and the plaster of Paris is the white colored substance, powdered substance. When it is used, when water is added to this, it absorbs the water and that become hard mass, that is called as the setting of plaster of Paris. Now next, plaster of Paris is used for what? Plaster of Paris is used in the surgical bandages, and it is used for making chalks, and statues. Statues के preparation में use करते हैं. Next, for the decoration purpose, decoration, building के decorations में POP को use करते हैं. Okay, surgical bandages में use करते हैं. Next, the preparation of the toys, statues, and also in the preparation of the chalks, plaster of Paris is used, and it is used for the decoration of buildings. So these are the uses of plaster of Paris. And now in this chapter, another question is there. Write the biological importance of Ca plus 2 and Mg plus 2. Generally, a Ca plus 2, magnesium plus 2, सोडियम और पोटाशियम इनको मिला के 4 मार्क्स में पूछ सकता हूँ. तो Ca plus 2 is calcium plus 2 ion. It is useful for blood clotting beta. Blood clot करने के वास्ते Ca plus 2. For the strengthening of the teeth and bones, calcium plus 2 ion is useful. Okay, in the preparation of cell wall in the plants, calcium is useful, and for the blood clotting also, Ca plus 2 is used. Mg plus 2 is present in the chlorophyll. ये chlorophyll में रहता है ये chlorophyll, and it is useful for what? Photosynthesis. Photosynthesis के वास्ते काम आता. So and magnesium is the cofactor, enzyme activator कैसा काम करता? So it activates the enzymes which converts the ATP into the ADP. These are the some biological importance of calcium and magnesium plus 2 ions. Next, in the third A group elements में कौन से questions है? Which are the questions are important? Third A group element में what is the inert pair effect? Inert pair effect क्या है? What is this inert pair effect? Now next, why BF3 is acts as the Lewis acid? BF3 को acidic nature रहता, what is the reason? तो देखिए बेटा मैं समझा रहा हूँ. Inert pair effect means in the thallium, in its last shell ns orbital electrons, are not participate in the bonding. Okay, so ns orbital electrons are not participated in the bonding. This is called as inert pair effect. Okay, so this is the inert pair effect. Thallium exhibits +1 oxidation state only due to the inert pair effect. This is the definition. BF3 contains the, you know this, BF3 contains the 6 electrons in its last shell. It is deficient in 2 electrons to get the octet. 8 electron नहीं है, it is lesser, it has 2 electron less to get the octet. So it is acts as the Lewis acid. What is the acid according to the Lewis? The substance which is able to accept the pair of electron is called as Lewis acid. BF3 accept the pair of electron to get the 8 electrons to get the octet. So it takes the 2 electrons. Therefore, the substance which is able to accept the pair of electron is called as Lewis acid. AlCl3, BF3, these are acts as the Lewis acids. Okay. These are the important questions. ये थर्ड ग्रुप से यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा हूँ. इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, BF3 का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है. अगर आपको AlCl3 का स्ट्रक्चर उतारो बोला तो इस तरीके से आप AlCl3 का स्ट्रक्चर उतार सकते हो. ओके, ऐसा डायमरिक बना हुआ रहता AlCl3 का स्ट्रक्चर है ये Cl. ओके, इट इज हैविंग पॉलीमरिक स्ट्रक्चर. So now then after that in the fourth A group elements में first question
why diamond is why diamond is hard? Why diamond is hard? This is the first question. Diamond is hard because due to the presence of the single covalent bonds. Single covalent bonds. In this diamond undergoes, in this carbon, in the diamond carbon undergoes the sp3 hybridization. Each hybrid orbital overlaps with the remaining three hybrid orbitals and forms the covalent bond. Due to the presence of the single covalent bond, it is a hard material and it is having high melting and boiling point values. So this is about the why diamond is hot. Now then, why diamond is the insulator of electricity. Okay, all are paid electrons, so no free electrons are present. Diamond does not have any free electron. Free electrons are not present. Electrons are not present. Therefore, it is insulator of electricity. This is about the answer. Now next, why graphite is the conductor of electricity? Why graphite? Why graphite is conductor of electricity? Okay, graphite is the conductor of electricity because on each carbon in the graphite one unpaired electron is present. Due to the mobility of this unpaired electron, it is the conductor of electricity. So you have to write like this: in the graphite, carbon undergoes sp2 hybridization and one unhybridized orbital is present in which free electron is present, unpaired electron is present. Therefore, due to the presence of this electron, graphite acts as the conductor of electricity. Why graphite is acts as lubricant? Lubricant मतलब विस्कोसिटी कम करने वाले को, फ्रिक्शन कम करने वाले को लुब्रिकेंट बोलते हैं. तो दिस ग्राफाइट इज द विस्कस, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, विस्कस है, दो लेयर्स के बीच में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ड्यू टू दिस ग्राफाइट इज एक्ट्स एज द लुब्रिकेंट. नेक्स्ट, व्हाट इज द वाटर गैस? वाटर गैस क्या है बोल के पूछता. वाटर गैस है मिक्सचर ऑफ कौन सा है भाई? CO plus H2 is called as water gas. It burns with the blue flame. Okay, that's why it is also called as the blue gas. Blue gas बोल के भी बुलाते हैं. And it is also called as a synthetic gas. It is prepared by the coal gasification reaction. कोल के ऊपर से आप मॉइस्चर पास कर लिए, will get the CO plus H2 mixture. This is the reaction is called as coal gasification reaction. Next, what is the ZSM5? ZSM5 is the catalyst, is used for the conversion of the methyl alcohol. Methyl alcohol is converted to the gasoline. In that during that reaction, ZSM5 is used as a catalyst. Okay, so this is the another one. Now next, what is the allotropy? Allotropy किसको बोलते हैं? Existence of the element in two or more physical forms with almost all same chemical properties is called as allotropy. Allotropic forms में कार्बन, डायमंड है, ग्राफाइट है. ओके, कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स में फर्स्ट वन इज द डायमंड, उसके बाद ग्राफाइट, उसके बाद फ्लोरीन्स, उसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड. ये तीन जो है एलोट्रोपिक फॉर्म्स है. इसमें हाइब्रिडाइजेशन लिखो बोल रहा आपको. डायमंड के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ग्राफाइट के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. अब परसों एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, फ्लोरीन्स के अंदर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, CO के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन है. ऐसा दिया तो आप लिखना है, हाइब्रिडाइजेशन लिखना है इसके. सो दीज आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स है भाई, ये अलग है. तो ये हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा बोल के मैं यहाँ पे लिखा. सो दिस इज अबाउट द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ द कार्बन. कार्बन के क्रिस्टलिन फॉर्म्स में डायमंड, ग्राफाइट और फ्लोरीन्स और उनके हाइब्रिडाइजेशन है, उसको जरा याद रख लेना है. दैट इज द इम्पोर्टेंट VSAQ. एलोट्रोपी हो गया. तो व्हाट इज द कैटानेशन? कैटानेशन सेल्फ लिंकेज ऑफ द एटम टू गिव्स द लॉन्ग चेन्स और साइकिल्स. लॉन्ग चेन्स और साइकिल फॉर्म करने की एबिलिटी को क्या बोल के बुला रहे हैं? कैटानेशन बोल के बुला रहे हैं. सेल्फ लिंकेज ऑफ द एलिमेंट टू फॉर्म्स द लॉन्ग चेन और साइकिल इज कॉल्ड एज catenation. So these are the some important questions in this
फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स में ज़्यादा पूछ रहा है, तो फोर्थ ग्रुप एलिमेंट में ज़्यादा डायमंड एंड ग्राफाइट के बारे में ही पूछता। थर्ड ग्रुप एलिमेंट के एसएक्यू में व्हाट इज द राइट अबाउट दी व्हाट इज द बोरॉन स्पीड टेस्ट एक है, और स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, ये क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ रहा उसमें। नेक्स्ट इन द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में व्हाट इज बीओडी, व्हाट इज द सीओडी, ये डेफिनेशन ज़्यादा पूछ रहा। और फिर उसके बाद में PAN क्या होता, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट क्या होता, व्हाट इज द बैड इफेक्ट पूछ रहा। और व्हाट आर द ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस कौन से है भाई वो। नेक्स्ट ओजोन डेप्लीशन, ओजोन डेप्लीशन एक पूछ रहा। नेक्स्ट एसिड रेन्स, एसिड रेन्स। नेक्स्ट अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ये। तो ये क्वेश्चन के आंसर्स कर रहा हूँ मैं। BOD, the amount of oxygen utilized by the microorganisms during 5 days at the room temperature is called as BOD. This is the one. COD, the amount of oxygen required to oxidize the organic matter which is present in the impure water. The amount of oxygen required to oxidize the organic matter is called as COD. Amount of oxygen utilized by the microorganisms during 5 days is called as the BOD. PAN is the peroxyacetyl nitrate. Next one, PAN, peroxyacetyl nitrate, peroxyacetyl nitrate, and it is responsible for photochemical smog, and due to the PAN की वजह से it destroys the cellulose. Cellulose in the plants is destroyed with the PAN. Not only that, it causes allergic diseases, skin allergy को produce करता, and respiratory diseases को produce करता. This is about the PAN. Greenhouse effect and greenhouse gases. When the CO2 level in our atmosphere increases, water vapor, CO2, chlorofluorocarbons absorbs the IR radiation which is coming from the sunlight and emits that energy of that radiation always on the surface of the earth. Due to that, temperature on the earth is increases, called as the greenhouse effect. The gases which are responsible for increasing the temperature of our globe are known as greenhouse gases. Those gases are CO2, water vapors, chlorofluorocarbons, hydrocarbons, CFCs. These are the responsible for the increase in our temperature, increase in the temperature of earth. Those are called as greenhouse gases. These are the greenhouse gases: water vapor, CO2, chlorofluorocarbons. Okay. Now next about the depletion of ozone. Okay, when freons are released in our atmosphere, chlorofluorocarbons are called as freons. Not only that, nitrogen dioxide is in excess, that reaches to the stratosphere and reacts with the ozone layer and decreases the density of the ozone layer. That is called as the depletion of ozone. Due to the depletion of ozone, UV radiations directly fall on the living beings. Due to that, skin cancer and cataract eye disease is caused, and photosynthesis rate in the plants is reduced. Next, acid rains. What are acid rains? If the quantity, if the pollutants in our atmosphere, which pollutants? NO2, SO2, CO2 pollutants in our atmosphere increases. These undergoes oxidation and dissolves in the moisture and forms the acids. SO2 gives the H2SO4, NO2 gives the HNO3, and CO2 gives the H2CO3. These acids are mixed with the rainwater and falls on the surface of earth. It is called as the acid rain. Due to the acid rain, purity of drinking water disturbed, aquatic life is dies, and the construction and the quality of old buildings, historical buildings, historical constructions की लाइफ स्पैन और उनकी क्वालिटी कम होती. दैट इज अबाउट द bad effects of acid rains, consequences of acid rains. Just I was explained this greenhouse effect. After that, what is the eutrophication? Eutrophication क्या होता?
इन द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से वेस्ट मटेरियल लेक में या पॉन्ड में रिलीज हो गए तो दोज वेस्ट मटेरियल आर कंज्यूम्ड बाय द वीड्स। जो पॉन्ड के अंदर अननेसेसरी प्लांट्स है उनको फूड न्यूट्रिएंट्स मिलने की वजह से वो दोज आर इंक्रीज इन द क्वांटिटीज। ड्यू टू दैट क्या होता ये वाटर लेवल इन द ponds decreases and that ponds become marshy and dry। this is the phenomena, this is the process is called as, इसको क्या बोल रहे हैं ऐसा ponds लेक्स एग्रीकल्चरल वेस्ट ponds और लेक्स में छोड़ने की वजह से वहाँ के वीड्स नेसेसरी प्लांट ग्रो होके वहाँ का प्लांट जो पॉन्ड है उसका वाटर लेवल डिक्रीज होके मर्शी बनना और ड्राई हो जाने को क्या बोलते हैं यूट्रिफिकेशन बोल के बुलाते हैं। यूट्रिफिकेशन this is about the eutrophication। so these are the some important things in this environmental chemistry। ये VSAQs है and the last chapter से 10th question यहाँ से चाहता VSAQs में nomenclature naming of the compounds है IUPAC names of the compounds, IUPAC names of the compounds है। IUPAC names में थोड़ा ये ज्यादा दे रहा भाई। ये देखिए ऐसा एक कंपाउंड दिया 1 2 3 4 और ये 5th कार्बन है। यहाँ पे देखिए ऐसा देखिए व्हाट इज दिस, इसका नाम क्या है IUPAC नेम लिखो बोल के बोल रहा। तो ये कीटोन है भाई जनरली। ओके 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसको क्या बोल के लिखना पेंट। ओके 1 1 2 3 3 कार्बन पे रहने से पेंट 3 ओन बोल के लिखना। ओके पेंट 3 ओन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगर ऐसा दे दिया आपको तो इसका नाम लिखो बोले तो क्या लिखना पेंट 2 ओन बोल के लिखना पेंट 2 ओन। दिस इज अनदर नेम। चलिए भाई नो नेक्स्ट वन देखिए ये CHO यहाँ डाल लिया, यहाँ पे NO2 डाल लिया तो क्या बोलते हैं बेंजो नाइट्रो बेंजोल्डिहाइड। कौन सा नाइट्रो बेंजोल्डिहाइड आर्थो नाइट्रो ओ नाइट्रो ओ मतलब आर्थो आर्थो नाइट्रो नाइट्रो बेंजोल्डिहाइड बेंजोल्डिहाइड। अगर CO है तो बेंजोइक एसिड बोलते हैं। आर्थो नाइट्रो को यहाँ से नंबरिंग देना है 1 2 उसको 2 नाइट्रो बेंजोल्डिहाइड बोल के भी बुलाते हैं। और नेक्स्ट अगर ऐसा दे दिया ना आपको तो CHO यहाँ दे दे के यहाँ पे NO2 दिया ना तो इसको क्या बोल के बुलाते हैं पैरा नाइट्रो बेंजोल्डिहाइड बोल के लिखते हैं इसको। पैरा नाइट्रो को क्या और एक नाम बोलते हैं 4 नाइट्रो 1 2 3 4 नाइट्रो बेंजोल्डिहाइड 4 नाइट्रो बेंजोल्डिहाइड। मटेरियल देखिए उसमें थोड़े समझा रहा हूँ मैं। तो ऐसा दे दिया आपको देखिए अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे दिया समझिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया समझिए। डबल बॉन्ड यहाँ पे डाल ले रहा हूँ मैं। व्हाट इज द नेम रिमेनिंग हाइड्रोजन डाल लीजिए आप। सेटिस्फाई करना है वैलेंसी 2 3 बॉन्ड्स हो गए, चौथा बॉन्ड ये तीसरा बॉन्ड ये चौथा बॉन्ड ये 4 बॉन्ड्स यहाँ पे 1 2 4 बॉन्ड्स हो गए। और नेक्स्ट वन यहाँ पे 3 बॉन्ड्स और ये 4th बॉन्ड। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड ऐसा दे दिया तो क्या करना भाई कैसे नेम देना क्या देना व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है भाई। तो 5 कार्बन है तो क्या लिखना पेंट लिखना पेंट। और पेंट के बाद में क्या लिखना है नंबरिंग देके यहाँ पे लिखना। देखिए यहाँ से ये डबल बॉन्ड यहाँ पे रखा ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे डाल लिया समझिए। once again I am writing this compound C डबल बॉन्ड C यहाँ पे डाल लिया। C डबल बॉन्ड C रहने की वजह से यहाँ एक हाइड्रोजन आ गया और ये 3 बॉन्ड्स ये 4th बॉन्ड हो गया। और नेक्स्ट अनदर कार्बन और ये कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे ऐसा है तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर रहा हूँ मैं। ओके C ट्रिपल बॉन्ड C हो गया यहाँ पे ये 4 बॉन्ड्स हो गए ये कार्बन पे 2 और एक 3 बॉन्ड ये। ओके गिव द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड का नाम बोलो तो क्या करना भाई 1 2 3 4 5 पेंट बोल के लिखना है पेंट। और 2 पे 1 फर्स्ट कार्बन पे कौन सा आया भाई डबल बॉन्ड पेंट 1 इन यहाँ पे इन आया डबल बॉन्ड आने से 1 इन लिखना पेंट 1 इन। और 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड आया तो 3 आइन ऐसा लिखना पेंट 1 इन 2 आइन। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। और नेक्स्ट
H2CH2 लिख के यहाँ पे OH डाला, यहाँ पे OH डाला, तो क्या बोल के लिखते हैं इसको? इथ 1,2 diol is the name of this compound. Diol is the name of this compound. Eth 1,2 diol. Okay. कार्बन है Cl ऐसा दे दिया, COOH दे दिया. ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ओके, इसको कैसा लिखते हैं भाई? ट्राइक्लोरो, 3 बार क्लोरीन आया, 1,1,1 ट्राइक्लोरो. ओके, ट्राइक्लोरो, 1,1 नहीं, ट्राइक्लोरो लिखना है इसको. ट्राइक्लोरो इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, ट्राइक्लोरो इथानोइक एसिड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. What is the neopentane? Neopentane किसको बोलते हैं? उसका IUPAC नेम लिखो बोला. तो देखिए नियोपेंटेन है, तो कार्बन के तरफ आप क्या करना भाई? CH3 ऐसा लिख लेना. तो उधर देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटेन. नियोपेंटेन बोले तो ऐसा स्ट्रक्चर लिखना है आपको. फिर एक बार लिख रहा हूँ. कार्बन is surrounded with the another 4 carbons like this. So CH3, it is known as neopentane. What is the IUPAC name of this neopentane? Second carbon पे methyl groups है. So total how many carbons are there? 3 carbons are there. प्रोप लिखना, और प्रोप और सिंगल बॉन्ड रहने से प्रोपेन, ये हो गया. सेकेंड कार्बन पे 2,2 2 बार मिथाइल ग्रुप आया. 2,2-dimethyl propane is the name of this compound. नियोपेंटेन का IUPAC नेम है ये, IUPAC नेम. अभी देखिए थोड़े टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स है. ये नोमेनक्लेचर 10th क्वेश्चन में पूछता बेटा, राइट द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. नहीं तो वुड्स रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये पूछता है. वुड्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? When alkyl halides are heated with the sodium metal. सोडियम मेटल से अल्काइल हाइड्राइड्स को हीट कर लिए, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू विल गेट दी हायर अल्केन. CH3 बॉन्ड CH3, NaCl चलने आता, CH3 बॉन्ड फॉर्म हो जाता, तो 2 NaCl. सो दिस इज द रिएक्शन, हीटिंग ऑफ द alkyl halides with the sodium metal is called as the which reaction? वुड्स रिएक्शन. ये वुड्स रिएक्शन है, ये भी VSAQ में पूछता. तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे IUPAC नेम ही पूछता, या नहीं तो वुड्स रिएक्शन, या नहीं तो आपको आइसोमरिज्म, कौन सा भी एक आइसोमरिज्म पूछ सकता. आइसोमरिज्म का क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म ले रहा हूँ, नहीं तो पोजीशन आइसोमरिज्म ले रहा हूँ. C यहाँ पे क्लोरीन डाला, तो इट इज कॉल्ड एज द 1-chlorobutane. 1-chlorobutane. I am writing the another compound C here. On the second carbon I am writing the chlorine. So remaining are the hydrogens, H. So all these are the hydrogens. It is called as the 2-chloro. IUPAC name of this compound is 2-chlorobutane. See that formula of these two compounds are same. What is the molecular formula? C4H9Cl. For this is also C4H9Cl. Okay, molecular formula is same, but these two are different because position of the substituent is different. Okay, this is the definition. Compounds with same molecular formula but they are differ in the position of the substituent or functional group are known as isomers, and this phenomena that is called as, यहाँ पे क्या बोल के बुलाते हैं? पोजीशन बदला हुआ रहा तो पोजीशन आइसोमर्स बोल के बुलाते हैं, एंड दिस इज द पोजीशन आइसोमरिज्म. फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म क्या है? कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे आर डिफर इन द फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एज functional group isomers, and it is the phenomena is called as functional group isomerism. Functional group isomerism. Compounds with same molecular formula for this is C2H3N. Compounds with same molecular formula but they are differ in the functional group. It is called as what? Functional group isomerism. तो ये हो गया भाई. और एक क्वेश्चन है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन पूछता. व्हाट इज द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन? ये बेंजीन है. व्हेन बेंजीन इज
heated with the nitration mixture HNO3 plus H2SO4. It is a nitration mixture. As a result of that, on the benzene NO2 is substituted. It is called as the nitration of benzene. So ये important VSAQs थे, चैप्टर वाइज मैं कंप्लीट करा, तो इससे आपका ये रिवीजन कंप्लीट होता.